Good morning, beta Deepak. Good afternoon, beta. How are you all, beta? Please mark your attendance first of all. Beta, please mark your attendance. Are you, beta, waiting for your response? Yes, beta, hurry up. Please mark your attendance. Then we will start your next portion. Hurry up, beta. So, beta, in my last video, we will discuss about a projectile. So, there are two topics for a projectile. One is projectile fired parallel to horizontal, and second one is projectile fired at an angle with horizontal. So, the projectile fired at an angle with horizontal, there is an relation mean to calculate the time period and to calculate the height, and next one to calculate the range of the projectile. So you know the time period is क्या 2u sin theta upon g. You can remember this formula. And height is u square sin square theta upon 2g, and range is u square sin 2 theta divided by g. There are three formulas to calculate the time period, the height, and a range of the projectile. So our next topic. So बेटा इसके बाद हमने इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ करना है, ट्राई करेंगे. So our next topic is centripetal acceleration. How to calculate centripetal acceleration? So you know the centripetal acceleration is equal to A is equal to V square upon R. This formula we can prove it. Now the centripetal force is equal to M into A. So F is equal to mv square divided by R. So it's your centripetal force. M is the mass, B is the velocity, and R is the radius. In unit 1, we can calculate from this relation, check the correctness of the relation. Now, this relation is correct. Mean left hand side dimensional formula is equal to right hand side dimensional formula. Yes, beta, Jaspinder. Good afternoon, beta. So, if you calculate now, V is equal to R into omega. This is the relation between linear and angular velocity. Linear and angular velocity. It's your relation. Now put the value in this equation. F is equal to m upon r multiplied. The value of v is r square into omega square. R will cancel out. F is equal to m r omega square. So you can remember also a centripetal force. This is also a centripetal force. Yes, Buddha. So in unit number 1, we can calculate the dimensional formula. You can check from this relation here. Your linear velocity is equal to displacement upon time. So its unit is meter per second. And angular velocity is denoted by omega. That is angular displacement upon time. And the unit of angular displacement is radian per second. So there is the difference between it's your linear velocity, it's your angular velocity. Now acceleration, linear acceleration is equal to velocity upon time. So its unit is meter per second square. Now angular acceleration is denoted by alpha. It is the ratio of angular velocity upon time. Now again solve this equation. Angular velocity displacement upon time. It means its unit is a radian per second square. So what you can remember what is the difference between linear and angular velocity. So after that our next topic is this. Mean आपको क्वेश्चन आ सकता है कि how to prove centripetal acceleration.
सो a इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन r। अगर पूछा है हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। पहले ये कैलकुलेट होगा a इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन r। आफ्टर दैट force is equal to mass into acceleration. Now put the value of a in that equation. So F is equal to mv square upon r. So move on the next topic. The name of the topic is centripetal force या फिर centripetal acceleration. Centripetal force या बेटा centripetal acceleration of the body. You can calculate both. Mean force भी calculate कर सकते हैं और centripetal acceleration भी calculate कर सकते हैं. So बेटा, you know, in last equation, if we calculate the last formula, there is motion in a plane, mean rectangular resolution of a vector in a plane. So you know, x is equal to r cos theta, प्रूव करा हुआ बेटा हमने, and y is equal to r sin theta. If you calculate the r in position vector, that is equal to xi plus y into j vector. Now put the value, r is the position vector. Now r is also equal to x का वैल्यू बेटा r cos theta into I plus r sin theta into j के इक्वल। लिसन केयरफुली, यहाँ से बेटा एक और फॉर्मूला आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा इनटू टी। यहाँ पे थीटा के लिए बेटा फिर से रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। मीन हियर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आप ऊपर देंगे। मींस x इज इक्वल टू r cos ओमेगा t। सिमिलरली y इज इक्वल टू r sin ओमेगा इनटू t। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। theta omega is the angular velocity and theta is the angular displacement. Mean angular velocity is equal to angular displacement upon time. So here r vector is equal to xi plus y into j vector. It means r vector is equal to x का वैल्यू है बेटा r cos omega t I plus r sin ओमेगा t into j वेक्टर। हमने बेटा a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेटा पहले निकालेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट dr अपॉन dt। मेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म मीन r cos ओमेगा t I plus r sin ओमेगा t into j वेक्टर। इसका बेटा डेरिवेटिव निकालेंगे, r का डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां से आपने सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, b वेक्टर ध्यान से देखना, यहां पे r एज इट इज cos ओमेगा t का डेरिवेटिव बेटा sin ओमेगा t और ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा। सिमिलरली बेटा यहां पे अगर देखते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ आगे मैंने ओमेगा t का डेरिवेटिव निकाला है, ओमेगा रिमेन कॉमन, dt अपॉन dt रिमेन कैंसिल आउट। सो हियर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो बेटा हरियर। यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी बेटा मीन दैट इज इक्वल टू r और यस बेटा इसको सॉल्व करना है। कोई बच्चा सॉल्व करेगा, देख रहा हूं मैं। प्लीज राइट द आंसर बेटा।
यहां पे आएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा प्लस आर एज इट इज साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इनटू जी। इस बच्चे को नहीं क्लियर होगा बेटा पूछने का b इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी आगे बेटा प्लस आर ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी इनटू जे वेक्टर। ये आ गया था मेरे पास, ठीक है। अब अगेन नाउ द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी d upon dt is called acceleration mean dy dt minus r omega sin omega t plus r omega cos omega t into j vector के इक्वल। हाँ जी बेटा a is equal to बेटा माइनस r ओमेगा एज sin ओमेगा t का डेरिवेटिव यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका sin ओमेगा t है there is some problem I think yes बेटा यहाँ पे आ रहा है I am right, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे r ओमेगा एज सच और sin ओमेगा t। यस बेटा sin ओमेगा t का डेरिवेटिव अब आएगा आपके पास cos ओमेगा t और सिमिलरली ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा इनटू i, ठीक है, प्लस r ओमेगा एज सच cos ओमेगा t का डेरिवेटिव माइनस sin ओमेगा t और ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा इनटू j वेक्टर की इक्वल। थोड़ा सा ऊपर का बेटा a इज इक्वल टू ये आ रहा है माइनस r ओमेगा इनटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t i माइनस r माइनस आ रहा है r ओमेगा इनटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t इनटू j वेक्टर। ध्यान से देखेंगे बेटा यहां से आपने ये राइट साइड रख करना, यहां से क्या करेंगे बेटा a इज इक्वल टू माइनस भी कॉमन ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन आ गया, दोनों में माइनस है और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है बेटा r cos ओमेगा t i प्लस r sin ओमेगा t इनटू j वेक्टर के इक्वल। लिसन केयरफुली बेटा, आर यू सीइंग? नो देयर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम बेटा, वेट थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। सो मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस भी कॉमन ले लिया ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, देख पा रहे हो बेटा, तो यहां पे आ रहा है r cos ओमेगा t i प्लस r sin ओमेगा t इनटू j वेक्टर। अब देखेंगे इधर r cos ओमेगा t और sin ओमेगा t का जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है बेटा, r वेक्टर का वैल्यू है, मींस a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे बेटा b इज इक्वल टू सॉरी b इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r वेक्टर। अब बेटा दिस b इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, नाउ ओमेगा इज इक्वल टू b अपॉन क्या आ जाएगा r, सो बेटा a इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा r वेक्टर। सो बेटा 1r रिमेन कैंसल आउट, सो a इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन r, इसको लिख दूंगा बेटा इन मैग्नीट्यूड,
तो बेटा इन मैग्नीट्यूड ऑल द टर्म आर पॉजिटिव। तो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। अब इसने पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सो यू कैन राइट F is equal to m into a, so F is equal to m v square upon r, that means it is called a centripetal force। ये निकाल दिया बेटा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, और इससे ऊपर निकाल रहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, माइनस में आ रहा है। आपने क्या करना है, नाउ पुट दिस वैल्यू मीन इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड ऑल द टर्म आर इन पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है बेटा। तो इसकी आपने जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा हुआ है बेटा, यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन आल्सो। अगर आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा ये जो इक्वेशन प्रूव हो रही है क्या ये सही है कि गलत है, तो बेटा F is equal to mv square divided by r, so left hand side F is equal to m into a, so this a is equal to b upon t, that implies m upon t as such, this velocity displacement upon time mean F is equal to m1, या left hand side is equal to m1 l1 t raised to power minus 2, it's your left hand side dimensional formula। So move on the right side, here right hand side m as it is divide by radius is equal to length multiply velocity is equal to displacement upon time, what here is a square, so square 1l remain cancel out, so right hand side is equal to m1 l1 t raised to power minus 2, it means left hand side equation is also equal to right hand side equation, your formula is correct। तो बेटा ये आप किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बेटा जिन बच्चों ने क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करी है वहां पे मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स भी बताए हुए हैं, अगर आपको याद है we can remind the fundamental units। so fundamental unit means F is equal to m into a, listen carefully, F फोर्स का यूनिट न्यूटन 1 न्यूटन एंड मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन is equal to 1 kilogram meter per second square, so you know 1 kilogram is equal to 1000 gram, that means it is equal to 10 raised to power 3 gram। similarly आगे बेटा 1 meter is equal to 100 centimeter, that means it is equal to 10 raised to power 2 centimeter। now put the value in this equation, 1 newton is equal to 10 raised to power 3 gram multiply by 10 raised to power 2 centimeter per second square, multiply का symbol है base c में, you can add the power mean 10 raised to power 5 gram centimeter per second square। now this gram centimeter per second square is equal to time। तो बेटा ये आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 टाइम इज इक्वल टू 1 टाइम इसके इक्वल होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर पूछा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू तो क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यू कैन रिमेंबर ऑल दीस यूनिट्स। सो आफ्टर दैट अगर बेटा कल वाले क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है देन वी कैन रिवाइज अगेन दिस लास्ट क्वेश्चन। अगर कल वाले क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अगर उसमें से बेटा आपको क्वेश्चन जरूर आएगा 101 और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे। अगर है तो बेटा प्लीज टाइप द मैसेज, अगर कंफ्यूजन है देन वी कैन रिपीट द क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, देयर इज ए 5 मार्क्स क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं आता है देन देयर इज एन 3 फॉर्मूलाज मीन for time period, for height and for a range, 3 formula can be used for your numerical portion। तो कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो बेटा प्लीज टाइप द मैसेज, वी कैन रिपीट द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल
एक दो क्वेश्चन थे बेटा, एक था प्रोजेक्टाइल फाइंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, सेकंड यूनिट आपका काइनेमेटिक्स इज कंप्लीटेड, ये बेटा कंप्लीट है। अब हमने जस्ट क्या करना है, जो प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन करा हुआ है उसके ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, मीनिंग टाइम पीरियड के ऊपर, हाइट के ऊपर और रेंज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। बेटा प्लीज गिव मी a response if any student can revise the last question, then we can revise the last question, that is projectile. Yes beta, waiting for your response. बेटा कोई तो जवाब दे दिया करो, यस नो। चलो बेटा करवा देता हूँ, अगर नहीं आप लिसन केयरफुली। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल, projectile fired at an angle with horizontal। ये बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 फॉर्मूला इसमें अराइज होंगे और आपने टोटल 6 केस करने हैं इसमें। देयर इज एन 6 केस। तो बेटा हियर तो मैंने कल भी बताया कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम रेंज के ऊपर थ्रो करना है, देन यू कैन थ्रो द ऑब्जेक्ट विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो बेटा इट्स योर x एक्सिस, इट्स योर y एक्सिस, सो इट्स योर ओरिजिन, it's your ux is the initial velocity along x axis, that is u by initial velocity along y axis, and this is your u means initial velocity, and this u making an angle theta। u क्या कर रहा है, making an angle theta। so you know ux को बेटा लिखेंगे आप u cos theta। similarly uy is equal to, अभी क्वेश्चन भी आपने रीड करा, u sin थीटा, बेस को cos थीटा बोलेंगे और परपेंडिकुलर को sin थीटा बोलेंगे। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट पॉइंट मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो बेटा मैंने दो कंडीशन बताई आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए कंडीशन यूज करेंगे x is equal to uxt plus 1 by 2 axt square। so here ux is equal to, ऊपर लिखा है बेटा देखो cos theta, जब ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो नहीं करा है इट मींस ax is equal to 0। now put the value in this equation, x is equal to u cos theta into t plus 1 by ax 0 t square, mean x is equal to u cos theta into t। similarly t is equal to x upon u cos theta। it's your first point, ठीक है जी। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। अगर बेटा ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है, then you can apply the equation y is equal to u by t plus 1 by 2 a by t square। so बेटा u y is equal to u sin theta and a y is equal to minus d। अब minus d क्यों लिख रहा हूं बेटा, because the object move opposite to the acceleration due to gravity, means y is equal to u sin theta into t minus 1 by 2 gt square। it's your second equation। move on the third, that is equation of trajectory, equation of trajectory। trajectory means जिस पाथ में बेटा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, the path along which object can be moved। so using this relation y is equal to u sin theta multiply by, आगे बेटा t है, t की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन वाली पुट करनी है, मीन x upon u cos theta minus 1 by 2 g x square upon u square cos square theta। so बेटा u remain cancel out, so y is equal to x
sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा माइनस 1 by 2g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos square theta. So this is your equation of trajectory. ये थर्ड पॉइंट आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। अब चलते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट के ऊपर। योर फोर्थ पॉइंट इज टाइम पीरियड कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। कि यहां से ओरिजिन से प्रोजेक्टाइल ने चलना स्टार्ट करा और ये बेटा एंड पॉइंट तक कितना टाइम लगा रहा है। सो यूजिंग v is equal to u plus 80 y एक्सिस में जा रहा है तो बेटा you can use y. So बेटा if the object move at a last point then by is equal to 0, uy is equal to u sin theta and ay is equal to minus d and t is equal to ty 2. अब तुम करो because here this is your a or b point, this is your height h and this is your range r. तो जितना टाइम बेटा o to k लगाएगा उतना ही टाइम o to q लगाएगा, इसलिए मैंने टाइम इंटरवल को हाफ कर दिया बेटा। So बेटा by here 0 is equal to u sin theta a by की वैल्यू बेटा minus d into t by 2. So you can calculate t is equal to 2u sin theta upon g. So बेटा it's your second relation mean third relation time period. Move on the fifth point, that is maximum height attained by the object. ये a to b का जो बेटा हाइट है ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर कितना जा रहा है। So you can use the relation of y axis u by t plus 1 by 2 a by t square y is equal to h पुट कर दिया u by u sin theta हो गया बेटा a by is equal to minus d and t is equal to t by 2. सिमिलर ये t पुट करेंगे मीन t is equal to 2u sin theta divided by 2g बेटा 2 में कैंसिल आउट सो इक्वेशन इज u sin theta upon g. नाउ बेटा y is equal to h here u by u sin theta multiply by small t का वैल्यू बेटा u sin theta upon g minus 1 by 2 a by g multiply by u square sin square theta divided by g square 1 g remain cancel out. So h is equal to u square sin square theta divided by g minus 1 by 2 u square sin square theta divided by g. Now you can take the LCM. LCM is 2g and u square sin square theta. It's your height. ये आ गया बेटा हाइट आपके पास, ठीक है। मीन टाइम भी आ गया, हाइट भी आ गया। अब लास्ट पॉइंट बचता है जिसमें हमने रेंज बता दी बेटा। तो यू कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन 6 पॉइंट अरेंज तो रेंज निकालना है बेटा ओ से लेके क्यू तक इसका कितना रेंज है। तो बेटा आर अरेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे अंदर बेटा आपको जानते हैं, ये देखो velocity is equal to displacement upon time. You can calculate the displacement, that means it is equal to velocity multiplied by time. ठीक है जी। तो बेटा आते हैं यहां से रेंज निकालेंगे तो रेंज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ux बेस कंपोनेंट में जा रहा है ux मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है जी। तो बेटा r u x को क्या बोलेंगे बेटा u cos थीटा और t का वैल्यू आपके पास है t is equal to 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. तो r is equal to क्या क्या बेटा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2u sin थीटा
डिवाइड बाय जी मीन r इज इक्वल टू u इंटू u स्क्वायर क्या बन गया बेटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय g इट मींस r is equal to u square 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta divided by g. It's your range. तो बेटा ये आपका काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जो है सेकंड यूनिट जो है कंप्लीटेड। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, then बेटा प्लीज टाइप द मैसेज किस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, वो बेटा आपकी प्रॉब्लम रिमूव करी जाएगी। और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा दैट्स वेरी गुड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा 1 मिनट वेट कर रहा हूं आपका, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आपको बेटा उसका 101 सॉल्यूशन दूंगा। तो देख लो, इस क्वेश्चन को देखना है आपने। तो अगर कोई कंफ्यूजन है बेटा प्लीज टाइप द मैसेज, वेट फॉर ए मिनट बेटा। यस बेटा नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।